Hello everyone. In this class, we will start the new chapter of A2 physics, which is gravitational field. Now, what is gravitational field? बच्चों, masses attract towards themselves and the nature of that force is always attractive. So, gravitational field is that region in which the gravity acts, right? For example, we are present in gravitational field. या कोई object, for example, I have this calculator. अगर आप इसको drop करेंगे, this calculator will move toward the center of Earth. So that pulling force of Earth is gravity and we are present in gravitational field of Earth, right? So in this diagram you can see Newton और उसके head के ऊपर एक apple fall कर रहा है. So basically that was the concept of gravity जिसकी वजह से उसने इसके ऊपर research start की. So what is gravity? Gravity is a force of attraction between the masses, right? अच्छा, याद रहे कि gravitational force is the weakest of all fundamental forces. There is gravitational force, there is electrostatic force, and there is nuclear force. So the weakest one out of them is gravitational force, but yet it has greatest range. ठीक है? Gravity acts on the objects which are at large distance. For example, Earth और Sun के दरमियान there is gravitational force of attraction. ठीक है? Earth is revolving around Sun because of gravitational force, right? So, as you can see, this person in the diagram, we say that his weight always act vertically downwards or towards the center of Earth. So, this is the center of Earth. His weight is acting vertically downward. So, here's an arrow for his weight, right? And this arrow is pointing right at the center of Earth. So what is the gravitational force here? बच्चों ये gravitational force weight के equal ही तो है, ठीक है? So the other name of gravitational force is weight, जिसको आप इस equation से find out करते हैं W equals mg, where g can be considered as almost constant at the surface of Earth. For Earth, its value is 9.81 newtons per kg, right? So अगर ये person या कोई भी object towards Earth attract हो रहा है, what will be the direction of gravitational field lines? Definitely, gravitational field lines will point towards the center of Earth, right? So हम किसी भी spherical shape के लिए जब भी gravitational field lines point करेंगे, they always will point towards the center of Earth. याद रहे कि Earth एक proper circular shape या proper spherical shaped object नहीं है. Rather, it is elliptical in shape. Also, the density of Earth varies at different parts of Earth. तो Earth की gravity जो है वो slightly vary करती है at the surface of Earth, but the averaged out value of gravitational field strength at the surface of Earth is 9.81 newtons per kg. Right? So, if any object is brought near the Earth, it is attracted towards Earth. So what will be the direction of gravitational field lines? All the gravitational field lines will also point towards Earth, right? So here you have a spherical object. Let's assume that this is Earth. What will be the direction of gravitational field lines? Definitely, the direction of gravitational field lines will be towards Earth. So here I am drawing the gravitational field lines. In fact, I have drawn two gravitational field lines. What will be the direction of these field lines? These field lines will point towards the center of Earth, right? So इसका arrow बनाएंगे towards Earth, right? Now some more. आप इस पूरे sequence को draw करेंगे because ये sequence as it is exam में भी आएगा. जब भी किसी object की gravitational field lines draw करनी होगी, so आप gravitational field lines at least 4 gravitational field lines draw करेंगे. और स्फीयर के केस में एटलीस्ट 8 ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस तो जरूर ड्रॉ करें एंड ऑल ऑफ देम मस्ट पॉइंट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, राइट? सो इन द केस ऑफ दिस स्फीयर, all the gravitational field lines are pointing toward the center of the spherical object. May it be Earth, may it be Sun, or any other sphere. So this is the direction of gravitational field lines. Now you will note that all of these gravitational field lines will meet at the center of Earth. And this object can be considered
this point can be considered as its center of gravity, or you call it center of mass. Now, this is the point at which the whole weight of the object appears to act. Now, some more interesting thing about this field lines, कि इन field lines का distance at the surface of earth is constant. For example, जितना ये distance है, उतना ही ये distance है, उतना ही ये distance है. ठीक है? So the distance between these field lines is constant at the surface of earth. That's why the value of gravitational field strength at the surface of earth is constant. This value is constant. Yes, this value slightly varies due to shape and density of earth, but we assume that this value is constant and its value is 9.81 newtons per kg. Right? One more thing about this gravitational field lines, कि जैसे ही आप अर्थ से अवे जाते हैं, what is happening to the distance between the field lines? As you move away from the earth, the distance between these field lines will increase. So, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो gravitational field strength due to earth भी reduce हो जाएगी. Right? अच्छा, now earth is a large mass. It's a large sphere. Similarly, sun is also a large sphere. All the planets can be considered as very large objects, right? But they all can be considered as point mass. सारे masses को आप dot consider कर सकते हैं, एक small spot consider कर सकते हैं, and you can consider that their masses is concentrated right at their middle or their center of gravity, right? So all masses can be considered as point mass. और वो point कहां पर होगा? That is right at their center of gravity. वो वाला point जहां पर सारी की सारी gravitational field lines meet करती. So what is point mass? Exam में 3 marks के लिए आपको आएगा point mass. Before understanding this point mass, have a look on these gravitational field lines once again. ये किस चीज की gravitational field lines हैं? ये इस spherical object की gravitational field lines हैं, right? What is the angle of these gravitational field lines at the surface of object? That angle is 90 degrees. That's why all of these lines are perpendicular to the surface of earth. All of these field lines are perpendicular to the surface of earth. So it means that they are radial lines, or they are along the radius. सारी की सारी field lines are along the radius. So जो भी line along the radius, so they can be called as radial lines. Now these field lines belong to this spherical object, but imagine just for an instant कि अगर ये sphere हो ही ना, यहां पर ये sphere present ही नहीं है, अब इस टाइम पर ये किस की फील्ड लाइंस लग रही हैं? अब हमें लग रहा है कि ये सारी की सारी फील्ड लाइंस उस सिंगल पॉइंट की फील्ड लाइंस हैं जहां पर ये कन्वर्ज कर रही हैं, एंड दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर, राइट? सो दिस इज द पॉइंट. वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि इस वक्त आपको लग रहा है कि ये सारी की सारी फील्ड लाइंस इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की हैं, लेकिन जस्ट फॉर एन इंस्टेंस आप इमेजिन करें कि ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ही नहीं है. अब आपको लगेगा कि ये सारी की सारी फील्ड लाइंस उस सेंट्रल डॉट की, उस सेंट्रल पॉइंट की हैं. सो वी कैन कंसिडर एनी मास एज पॉइंट मास कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर. और सारे के सारे डिस्टेंसेस इस चैप्टर में जितने भी डिस्टेंसेस कंसिडर करने, यू विल कंसिडर ऑल दोज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, रादर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट? सो व्हाट इज पॉइंट मास? आप लिखेंगे ऑल द ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस आर gravitational field lines are perpendicular, or you can call them radial, and they all meet या converge at a single point. At a single point. That is the center of object.
that is the center of sphere. So any sphere can be considered as point mass concentrated at the center. ठीक है, तो अब याद रहेगा आपको कि हमने जितने भी मैसेस कंसिडर करने हैं हमने उनको पॉइंट मैस कंसिडर करना है. ठीक है, और उनको जब रेफर करना है वी कॉल देम पॉइंट मैसेस. अर्थ इज अ पॉइंट मैस, सन इज अ पॉइंट मैस. ठीक है, और वो पॉइंट कहां पर कंसिडर होगा? राइट एट देयर मिडल, राइट एट देयर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी. राइट. अच्छा, अब हमें ये पता चल गया कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये ऐसी फील्ड है जिसके अंदर एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स बिटवीन मासेस एंड इट्स नेचर इज अट्रैक्टिव. अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये कितनी होती है. एंड दैट इज गिवन बाय न्यूटन वंस अगेन. राइट. So we will write Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation. Now this Newton law of gravitation will tell you कि एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स. राइट. सो यू विल राइट फोर्स बिटवीन पॉइंट मैसेस. कौन सी फोर्स? डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स. फोर्स बिटवीन पॉइंट मैसेस. अब मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था एवरी मास विल बी रेफर्ड एज पॉइंट मास. और अगर आप इसकी स्टेटमेंट में पॉइंट मास नहीं लिखेंगे तो आपका मार्क डिडक्ट होगा. इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है. सो फोर्स बिटवीन पॉइंट मैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. फोर्स बिटवीन पॉइंट मैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेस and inversely proportional to the square of distance between them. Right. अब जब मैं आपके सामने मैसेज ड्रॉ करूंगा तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी और रिलेटेबल हो जाएंगी. राइट. लेट्स अज्यूम दिस इज वन मैस, दिस इज द अदर मैस. ठीक है, जो लार्जर मैस है उसको आप कैपिटल एम कह दें और जो स्मॉलर मैस है उसको आप स्मॉल एम कह दें. ठीक है, बट वी हैव टू कंसिडर पॉइंट मैसेज. सो मैस विल बी कंसंट्रेटेड राइट एट देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, तो हम इन पॉइंट्स को जो है वो पॉइंट मैसेस कंसिडर करेंगे, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को. ठीक है, इस चैप्टर में डिस्टेंसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल आर. यस, जनरली द सिंबल आर इज फॉर रेडियस, बट हियर डिस्टेंसेस आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल आर. सो फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फर्स्ट मास टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अदर मास द डिस्टेंस इज आर. ठीक है. So you have two masses, capital M and small m, and they are separated by distance r. According to Newton's law of gravitation, force is directly proportional to the product of masses and force is inversely proportional to the square of distance between them. Right? तो distance का square जरूर करना है. Students अक्सर ये mistake करते हैं कि वो square लिखना भूल जाते हैं. Right? So if we combine these two expressions, the expression of force will become that force is proportional to product of masses and at the same time force is inversely proportional to the square of distance between them. Right? So what happens when you replace this sign of proportionality with the sign of equality? जब आप लिखेंगे force is equal to, you will have to introduce constant of proportionality here. And in this case, that constant of proportionality is symbol G. Right? So force is equal to Gmm over R square. Now this is the mathematical form of Newton's law of gravitation. ठीक है? So force is equal to
Gmm over r square. You have to memorize this equation. You have to memorize this equation, right? Where F is force, and definitely the SI unit of force is Newton. Yaad rakhna, gravitational force is always attractive. Gravitational force is always attractive. G is referred as gravitational constant. G is gravitational constant, right? Its value is 6.67 multiplied by 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kg square, right? This value will be given to you in the data, but जितने क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस की, आप अगर उतनी प्रैक्टिस करेंगे तो ये वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएगी. अदरवाइज दिस वैल्यू इज गिवन, राइट? कैपिटल M is mass, small m is also mass, and definitely that's a unit of mass is kg, right? अच्छा, sometimes equal masses होती हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, एक mass को m1 कह दें, दूसरे को m2 कह दें, या दोनों के लिए सेम सिंबल यूज कर लें. And r is distance between point masses. R is distance between point masses. ठीक है? अब आपको बच्चों ये वाली इक्वेशन याद होनी चाहिए, दैट फोर्स इज इक्वल टू Gmm over r square. कभी भी आपने इस कैपिटल G को स्मॉल g से कंपेयर नहीं करना. There is a difference. Capital G is gravitational constant, right? Its value is 6.67 into 10 raised power minus 11 everywhere. ये कभी भी चेंज नहीं होगी. और स्मॉल g is gravitational field strength. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ तो अर्थ की सरफेस पे ही वेरी करती रहती है, और अगर आप अर्थ से दूर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. डिफरेंट प्लैनेट की डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है. सो स्मॉल जी इज समथिंग एल्स जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ यू विल राइट दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, इट इज अ वीक फोर्स. तो फिर प्लैनेट्स के दरमियान इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सके, या सन और अर्थ के दरमियान इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स है कि सन अर्थ के ऊपर अपनी ग्रिप रख सके और उसको अपने अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव करा सके? यस, बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर केस द मैसेज आर वेरी ह्यूज. ठीक है, उस केस में मैसेज आर वेरी सिग्निफिकेंट, तो फोर्स भी सिग्निफिकेंट हो सकती है. बट फॉर स्मॉल मैसेज दिस फोर्स इज अ वीक फोर्स, एंड वी विल प्रूव दैट दिस फोर्स इज अ वीक फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ये पेन ड्रॉप होता तो मेरे हाथ के साथ स्टिक हो जाता. मैं इसको अपने हाथ से अलग करने के लिए फोर्स लगाता, बिकॉज दोनों मैसेज के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स होती. ठीक है, अगर आप किसी को हग करते तो बस फिर आप उसके साथ चिपक जाते, बिकॉज आप उससे अलग नहीं हो सकते. मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे चाहते हैं कि ऐसा ही हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लैप करते, आपके हाथ एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाने, तो फिर अलग करने पड़ने थे लाइक दिस, और वॉकिंग भी डिफिकल्ट होना था, वॉक करना भी मुश्किल हो जाना था, तो वो डिसेबिलिटी हो जाती. तो नेचर ने हमारे लिए इस फोर्स को ऐसे बैलेंस किया है कि अपनी अप्रोप्रिएट अमाउंट में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही. Right? It is a weak force. You have to admit it is a weak force. For example, you have 2 point masses. These can be 2 stones. These can be 2 blocks or anything else. Let's assume that the larger mass is a 20 kg mass and a smaller mass is a 10 kg mass, and they are separated by a small distance. Let's say they are separated by a distance of 10 centimeters. So, the distance between these 2 point masses is 10 centimeters. But you know that centimeter is not the SI unit. So SI unit of length is meters. This value will be 0.1 meters, right? So let's figure out the value of gravitational force between them. So what is the formula of gravitational force? Gravitational force is equal to Gmm over r square, right? Let's apply this formula
on these two masses, the value of gravitational constant is written here, right on the top, which is 6.67 multiplied by 10 raised to power minus 11. Capital mass is 20 kg, small mass is 10 kg, and the distance between them is 0.1. You have to square this distance. Substitute these values in the calculators. 6.67 multiplied by 10 raised to power minus 11 multiplied by 20 multiplied by 10 divided by 0.1 square. And this value is very small. This value is very small. In fact, this value is coming out to be 1.3 into 10 raised to power minus 6 Newton or 1.3 micronewton. तो वो जो इतनी स्मॉल फोर्सेस से ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, ये तो अपनी फ्रिक्शन को ही ओवरकम नहीं कर सकेंगे. सो इट इज प्रूवन दैट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स, राइट? Let's assume that a person is standing on Earth and how much gravitational pull, gravitational force is acting on that person. So, here is Earth. Earth is represented by this sphere. ठीक है? तो sphere को थोड़ा सा proper कर देते. इस वक्त तो ये आपको circle लग रहा होगा. Now this is sphere, this is its center, and this is the radius of Earth from the center to the surface. ठीक है? अब Earth हमारा home है, we live in Earth. ठीक है? हमें अपने घरों का तो साइज पता होता है, 1 कनाल हाउस है, 10 मरला हाउस है, लेकिन Earth is our larger home, सबका घर है. तो Earth के भी कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए. What is the mass of Earth? मैं इस ब्लॉक में एक बार ही लिख देता हूं ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं आपको मैस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ तो एटलीस्ट याद रहे. याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आया तो गिवन होगा मैस ऑफ अर्थ इज 6 multiplied by 10 raised to power 24 kg and radius of earth is 6390 kilometers approximate, right? So this is earth and a person is standing on the surface of earth. Like we are standing on the surface of Earth. The mass of this given person is small m, which is 80 kg. ठीक है? जो इसकी gravitational force है, that will be acting toward the center of Earth. So this is the arrow for its gravitational force. और याद रखिएगा, this gravitational force is equal to his weight. So generally, up to A1, आप weight किस equation से find out करते थे? For weight, you used to apply this equation. Weight is equal to mg. Mass of this person is 80 kg and gravitational field strength is approximately 9.81. Right? So 80 multiplied by 9.81 is 784.8. 784.8 newtons. Now we have this equation of gravitational force. That force is equal to gmm over r square. Let's find out his weight using this equation. So gravitational force is equal to G m m over r square, right? Substitute this value. The value of gravitational constant is 6.67 multiplied by 10 raised to power minus 11. Mass of earth is 6 multiplied by 10 raised to power 24. Mass of person. Mass of this person हमने assume किया है 80 kg and the distance will be the radius of earth and that radius of earth is 6390 kilometers. Kilometer is not the SI unit, so you will multiply it by 10 raised to power 3 to convert it in meters. So square it, right? So once again, let's substitute the values in the calculators. 6.67 multiplied by 10 raised to power minus 11 multiplied by mass of earth, which is 6 multiplied by 10 raised to power 24 multiplied by 80 divided by 6390 multiplied by 10 raised to power 3 square. Now this value is coming out to be 784.1 newtons. 784.1 newtons, which is very close
which is very close to the weight. Weight भी 784 point something है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी 784.1 है. तो हमने कुछ अप्रोक्सीमेशंस भी तो किए हैं ना. यहां पर मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ की भी तो एवरेज वैल्यू ली है ना, राइट? सो इन फैक्ट दिस ग्रेविटेशनल पुल इज इक्वल टू द वेट ऑफ दिस पर्सन. नाउ यू नो कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है. ग्रेविटेशनल फोर्स पर्सन के वेट के इक्वल ही होती है, एंड दैट वेट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द center of earth, right? So you will memorize this equation of gravitational force, which is gravitational force is equal to gmm over r square, and you have to consider all the distances from the center of one mass to the center of other mass, and all masses can be referred as, very important thing, they all can be referred as point masses. तो फिर यहां पे हमने जो एक डिस्टेंस कंसिडर किया है दैट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, तो दूसरा डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से क्यों कंसिडर नहीं किया, सेंटर ऑफ पर्सन से क्यों कंसिडर नहीं किया. यहां से हमने पर्सन की हाफ हाइट ऐड क्यों नहीं की इस डिस्टेंस में, बिकॉज हाफ हाइट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मीटर. दैट 1 मीटर डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ विच इज 6390,000 मीटर्स. ठीक है, तो उस 1 मीटर की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. In the next class, we will study the concept of gravitational field strength, gravitational potential and gravitational potential energy, and some more interesting concepts like satellites and planets is coming in this chapter. So stay tuned. Do subscribe, Slate. Thank you.